What if I told you that every single time you see a heavy electric locomotive pulling a loaded freight train across India, or you see a high-speed Vande Bharat train fly past the platform, there is a very high chance that the invisible power electronics that are powering and running these trains is made by one single manufacturer. Right from high voltage traction transformers to IGBT converters, this company manufactures everything. The company is now transitioning to making the entire propulsion systems that power and run these systems instead of supplying just components. So now this company is basically building the high voltage electrical muscles that are used to power and run the electrification of your Indian railway infrastructure. Historically, the market has looked at this company as some sort of mid-teen cyclical growth kind of company that only used to do well when your Indian railways used to give out orders or they used to do well. But why I'm invested in this company or why I'm tracking this company is because of its incredible hyper-aggressive strategic blueprint that the management has given that is targeting a 10x increase in their top line and basically aiming to scale their revenue, which is less than 1000 crores to $1 billion till FY31. So in this video, we're going to break down the exact fundamental factors of how the company can 10x its top line in the next 5 years. And we're going to look at the business model of the company. We're going to look at what the company actually makes, where these products are actually used, what they do, what are the competitors looking like. Next, we'll do a result and Concall analysis. We'll try to understand what kind of guidance the management is giving, what kind of valuations are coming out from a FY27 or FY28 point of view, and what you should do as a current investor invest in this company or as an investor looking to invest in this company. And just a standard disclosure before we start the video, I am invested in this company. You can just use a screenshot right here that I have been invested in this company after its Q3, Q4 results because I think the company is a good bet, but that is not an investment recommendation, not a buy or sell recommendation. Only purpose behind making this video is to provide you the analysis so you guys can take your own decisions. So on that note, let's start the video. Now, before we move on to a more company-specific analysis, I just want to address one question that a lot of investors who are invested in the company और वो ट्रैकिंग द कंपनी हैव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे कंपनी के वैल्यूएशंस आपको बहुत एक्सपेंसिव दिखेंगे. स्क्रीनर पे आओगे आप, सो आपको दिखेगा 97 की पी है. भाई इतनी एक्सपेंसिव कंपनी को क्यों देखना है. एंड अगर आप रिजल्ट्स भी देखोगे तो आप देखोगे कि 10% मार्जिन हैज़ ड्रॉप टू 3% and your 10 crores ka PAT has gone into basically a loss. The answer to this question is that basically company had done an acquisition of a company and that company was loss making, and whenever company presents its consolidated results it has to increase its subsidiary, acquisition and all the other companies as well. So अगर आप इसको standalone basis पे देखोगे तो now if you look at it, company की P drops to 66 times which is in line with its median P's of 3 and 5 years, and अगर PEG देखोगे PEG is 0.5 which is very attractive. And now the interesting part, when you come at the results, you see company के results all time high पे. Sales has increased by approximately 42%, PAT has increased by almost 60%, margins are also stable, and this is something that you can only realize when you actually track the company. वरना आप क्या स्क्रीन पे देखोगे रिजल्ट बोलोगे खराब कंपनी है, अब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस करोगे. But what you have to do is go a bit deeper. I know it takes a bit of time, but just go deeper. And आप देखो कि results के बाद also stock has basically 20-30% up है stock. So this is why you always go a bit deeper. If it takes a bit of time, no worries, but at least you'll understand the entire picture. So now coming to the more business specific analysis, what the company is basically a traction transformer manufacturer. So every railway or locomotive, whatever you see now, उसमें एक traction transformer रहता है. Because आप देखोगे railways के ऊपर जो line रहती है बड़ी बड़ी, that is very high voltage line. So वो electricity को एक useful वोल्टेज पे लाना उसका काम करता है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर. इसलिए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं है, दैट एवरी लोकोमोटिव नीड्स. So it is almost a 70% market share I think the company has. A company also making propulsion systems. So ये business में भी same thing हो रहा है. Basically company पहले एक component transformer बेचता था, but now company is making the entire propulsion system. And if you look at all of the stocks that have made money in the past, be it Bellrise System, be it Sirma SGS Technology, be it Apollo Microsystem, all of the stocks in my portfolio, why they have made money? Because they have transitioned into a more integrated player. पहले वो बस एक प्रोडक्ट बेचते थे, बट अब एक सिस्टम बेचते हैं. जब आप सिस्टम बेचते हो ना, सिस्टम में मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसका मार्जिन आपको मिलता है एंड यू मूव हायर अप द वैल्यू चेन, राइट. अगर आप एक कस्टमर हो, आप बोलोगे कि मेरे को पूरे एक लोकोमोटिव बनानी है, उसके लिए प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए. विल यू सोर्स योर मटेरियल फ्रॉम 100 डिफरेंट गाइज और यू विल जस्ट गो टू वन गाय, ही विल प्रोवाइड द एंटायर प्रोपल्शन सिस्टम. दैट विल बी द more convenient option for you and the more better pricing opportunity for you. So same thing Hind Rectifiers में क्या हो रहा है कि FY27 और FY28 में as the company moves on to a more propulsion system kind of a manufacturer ना, like system manufacturer, so we can see it margins and company doing very well. हिंद रेक्टिफायर्स बेसिकली क्या करता है, जो भी सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं इंडिया में, दे नीड ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स टू बेसिकली कन्वर्ट द जो वायर की एनर्जी है इनटू योर यूजेबल
energy that is used to drive the traction motors. So basically, Hind Rectifiers makes these transformers and holds the largest market share in this. And apart from that, the company also goes into railways में rectifiers, inverters, battery chargers, HVAC systems ये सब भी बनाती है. And then industrial applications भी है, where the company provides products for UPS that are used in steel plants, mining and power transmission as well. So the company is basically a mix of your electrification railway theme as well as a kind of a power transmission theme as well. And now, as I mentioned, company एक transformer company नहीं है. Company is building propulsion systems, like जो system में जो पूरा आता है, transformer आता है, traction आता है, drivers आता है, entire process, the entire system the company is making as a whole and selling. इससे क्या होगा? Better margins, better customer control, and you can see company has like 67 years of experience और 67 years मार्केट में है. सो इंडियन रेलवेज विल ऑलवेज ट्रस्ट दिस गाय बिकॉज पास में भी ऑर्डर्स दिए, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है. सो वो प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए भी द इंडियन रेलवेज विल प्रेफर दिस कंपनी. एंड इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग नो कॉपर कंडक्टर्स. कंपनी बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है सो दैट रॉ मटेरियल पे बेटर कंट्रोल रहे. आपने देखा होगा पास में कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑल ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स आर गोइंग क्रेजी. लाइक प्राइसेस 10-20% ऊपर आराम से ऐसे ही जा रहे हैं. सो कंपनी इज डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन सो दैट कंपनी की जितनी अच्छी जो ऑर्डर बुक बिल्ड हो रही है, जो हम देखेंगे ऑर्डर, तो वो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने में कोई इशू ना है. उसके लिए कंपनी इज ऑल्सो डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन कॉपर कंडक्टर्स. एंड थिंक अबाउट कॉपर कंडक्टर्स इज दैट ना नॉट एवरी कंपनी दैट इज मेकिंग ट्रांसफॉर्मर्स हैज़ दीज बैकवर्ड इंटीग्रेटिंग फैसिलिटी. सो कंपनी के पास अगर एक्सेस है तो कंपनी एक्सेस कॉपर कंडक्टर्स बेच भी सकते हैं दूसरे कंपनीज को. सो यू कैन सी द डिफरेंट सेक्टर्स दैट इट केटर्स टू. फर्स्ट इज अ ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर, then you have your power electronics, you have your propulsion systems, you have your copper conductors, and EMS and robotics में भी companies expanding through the acquisition. So इसमें companies guiding 25-30% CAGR, power electronics, industrial में companies guiding 15-20% CAGR, and propulsion system if it gets certified now, because the thing with railways and every government agencies, there's certification, there's testing, there's approval, there's a lot of things. Because अगर आप रेडियो जैसे बड़ी चीज़ में आपका प्रोडक्ट दे रहे हो तो फिर there's a lot of time behind the product getting accepted. एंड दिस इज अनदर मोट और एंट्री बैरियर दैट दिस कंपनीज हैव. बिकॉज एक बार आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया तो फिर गवर्नमेंट चेंज करेगी ही क्यों? अगर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सो फिर अदर प्लेयर्स को अगर वही प्रोडक्ट बनाना है तो उनको वापस टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ये सब करने में बहुत टाइम लगता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एंट्री बैरियर दैट दिस कंपनीज हैव. एंड अगर इसका प्रोपल्शन सिस्टम गेट्स सर्टिफाइड एंड अप्रूव ना, दिस कैन बी अ मेजर गुड ड्राइवर फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड. नाउ प्रोपल्शन सिस्टम इज बेसिकली हिंद रेक्टिफायर्स का डेकेड लॉन्ग जैकपॉट. अगर आप देखोगे एक ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर एक लोकोमोटिव के लिए अराउंड 80 lakhs to 1.2 करोड़ जाता है. बट द एंटायर प्रोपल्शन सिस्टम दैट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2.5 करोड़ पर लोकोमोटिव. सो यू कैन सी द काइंड ऑफ ग्रोथ और द काइंड ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन आई वाज टॉकिंग अबाउट. इससे वही होता है. सो एज यू मूव हायर अप द वैल्यू चेन, मोर बेटर इट इज फॉर द कंपनी. कंपनी को बेटर वैल्यूएशंस मिलते हैं एंड बेसिकली कंपनी ग्रो भी बेटर करती है. एंड द रेवेन्यू पर लोकोमोटिव कैन बेसिकली 1.5-2 times x इफ द पूरा प्रोपल्शन सिस्टम का पैकेज कंपनी को मिल जाता है. एंड प्रोपल्शन सिस्टम में भी कंपनी हैज आइडेंटिफाइड 1500 लोकोमोटिव्स एज एड्रेसेबल एंड कंपनी इज टारगेटिंग 10%, दैट मीन्स 150 लोकोमोटिव्स इनिशियली. एंड उसमें भी कंपनी का टाइम कितना होता है 225 to 375 करोड़ इन द फर्स्ट फेज अलोन. एंड कंपनी करेंटली रेवेन्यू कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ का. सो कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू टाइम मार्केट इज ऑल्सो गुड फॉर दिस प्रोपल्शन सिस्टम. एंड कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है. 31 मार्च 2026 पे कंपनी की ऑर्डर थी 845 करोड़. एंड सिमिलर टू दिस कंपनी का भी ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 1 times बुक टू बिल्ड रेशियो रहता है. एंड अनदर गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी इज कि आपने देखा होगा कि रेलवे बहुत सिक्लिकल है. कंपनीज लाइक योर इरकॉन, RVNL, ऑल ऑफ दिस कंपनीज दे आर वेरी सिक्लिकल. एक टाइम में बहुत अच्छा करते हैं, एक टाइम बहुत खराब करते हैं, राइट? ये क्यों होता है? बिकॉज इन कंपनीज में प्राइस वेरिएशन क्लॉज नहीं होता. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक रेलवे का टेंडर देती है फिक्स प्राइस पे एंड वो कंपनीज एग्जीक्यूट करते हैं. बट पास में हमने क्या देखा है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने बढ़ गए, इनके मार्जिन बहुत कोलैप्स कर गए. बट हिंद रेक्टिफायर्स का एक प्लस एडवांटेज क्या होता है इज दैट दीज कंपनीज हैव योर PVC, दैट इज प्राइस वेरिएशन क्लॉज. सो if the price of raw materials increase etc, then these companies can also increase their cost of the order. So इससे कंपनी के बेसिकली जो मार्जिन रहते हैं, the margins are stabilized. Even if you look at it, इतने volatile market में भी कंपनी के margins were stable around 10-11%. So this is a good thing for the company कि almost 80-90% of their orders have price variation clauses. So with that, we'll dive deeper into the business of the company. We'll understand the different product portfolio, what are its application, and company कैसी type of growth guide कर रही है. First, we have traction transformers. That is approximately 700-750 revenue, approximately 75-80%. That is used in your electric locomotives. जैसे देखा हमने वंदे भारत, the different types of electric locomotives, EMUs, metros वगैरह में ये traction transformers यूज होता है.
and इसका EBITDA is approximately 15 to 18% with your price escalation clauses, and the company is also guiding 30% growth for this business segment. So this business segment is basically the core of the business, and core अच्छा कर रहा है तो company भी अच्छी करेगी. Now we have a power electronics that is approximately 10 to 12% of the business that is used in a mining, steel, cement, power, defense, industrial applications basically. So this is a bit of competitive market. Company has low margins because इसमें इस सेगमेंट में कंपनी कितना अच्छा ब्रांड रिकॉल नहीं है जितना रेलवेज में है, but still company is using this for diversification purposes. And then we have the HVAC and auxiliary systems, that is a small part of the business. इसमें it is used in your LHB coaches, your Vande Bharat sleeper classes, etc. And this is a higher margin proprietary design, and all of these new coaches, new trains that are coming out from the Indian Railways, all of these are very good. Like पहले के जो ट्रेन से कंपेयर करोगे that is very premium भी आता है, थोड़ी क्वालिटी भी बेटर रहती है. सो इन सब रेलवेज और लोकोमोटिव्स में कंपनी प्रोवाइड्स HVAC systems etc. And the most important kind of a growth driver for the company, that is a propulsion system, that is a 25-30% margin kind of potential है once the certification gets approved, once it company gets tenders वगैरह. So this is one thing that you should always look out for. अगर कंपनी को एक अच्छा टेंडर वगैरह मिल जाता है, so stock can rally very well. सो कंपनी का ग्रोथ आउटलुक तो अभी कुछ है नहीं, फॉर सर्टिफिकेशन वगैरह पेंडिंग है, ट्रायल्स चल रहा है अभी, बट वंस कंपनी गेट्स सर्टिफिकेशन टेंडर्स, दैट कैन बी अ मेजर ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी. एंड एज यू सॉ, प्राइमरी कस्टमर इंडियन रेलवेज 90% ऑफ द रेवेन्यू, एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंडस्ट्रियल कस्टमर्स भी है कंपनी के. एंड दिस इज अ मोर नीश काइंड ऑफ अ डीपर काइंड ऑफ एनालिसिस. इसमें आपको एक्चुअली समझेगा कंपनी के फैक्ट्री में एक्चुअल प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं. कोर वाइंडिंग डिज़ाइन करते हैं, देन योर सिलिकॉन स्टील लैमिनेट्स, वाइंडिंग, असेंबली, टाइप टेस्टिंग, डिस्पैच, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ये बेसिकली प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा है. दोज आर इनटू इक्विटी रिसर्च और दोज हू वांट टू डाइव डीपर, दे कैन स्टडी दिस एज वेल. नाउ लुकिंग एट द वैल्यू चेन ऑफ द कंपनी, वी हैव अपस्ट्रीम सप्लायर्स हु सप्लाई टू द कंपनी. यू हैव योर CRGO सिलिकॉन स्टील, कॉपर जो कंपनी अब इन हाउस बना रहा है, यू हैव योर क्राफ्ट पेपर, देन यू हैव योर ट्रांसफॉर्मर ऑयल, देन यू हैव योर बुशिंग्स जिसमें यश हाई वोल्टेज वगैरह कंपनीज आता है. देन यू हैव हिंद रेक्टिफायर्स. हिंद रेक्टिफायर्स बेसिकली क्या करता है, कस्टम ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन, इन हाउस CTC कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, HVAC सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लेता है, एंड इट सेल्स टू होम your Indian Railways basically and other industrial companies. Now coming to the order book section, company की order book is on Q4 के end में it was 845 crores which was 465 which was 150 crores last year. So you can see 150 crores से basically company की order book 850 crores हो गई है. That is a growth of 4 to 5 times. दिस इज द काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनी के ऑर्डर बुक में आई, एंड यही ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यूज में भी रिफ्लेक्ट करी. कंपनी ग्रो बाय 40-45% एंड कंपनी इज गाइडिंग टू ग्रो बाय 30%. सो ये ग्रोथ किधर से आ रही है, ऑर्डर बुक से आ रही है. एंड अगर आप देखोगे न्यू ऑर्डर इनफ्लोज वर ऑल्सो 850 करोड़, एंड FY25 में ऑर्डर बुक थी 150 करोड़, दैट एक्सपैंडेड टू योर 850 करोड़. एंड कंपनी का ऑलरेडी FY27 का जो रेवेन्यू है उसकी 90% ऑर्डर बुक कंपनी के पास ऑलरेडी है. सो ऐसा भी इशू नहीं है कि ऑर्डर बुक नहीं है, बस रेवेन्यू का टारगेट दे रहे हैं. दिस इज लॉट ऑफ ऑर्डर बुक एज वेल एंड कंपनी इज गाइडिंग टू एग्जीक्यूट दैट ऑर्डर बुक एज वेल. कमिंग टू द एंट्री बैरियर्स और द काइंड ऑफ मोड दैट द कंपनी हैज़. फर्स्ट इज वी सॉ की RDSO सर्टिफिकेशन. कंपनी 67 ईयर्स से बिजनेस में, सो कंपनी का ब्रांड रिकॉल अच्छा है, सर्टिफिकेशन कंपनी के पास बहुत है, प्लस कंपनी हैज़ अ मार्केट लीडरशिप प्लस इंस्टॉल्ड बेस. सो अगर कंपनी लीडरशिप है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंपनी कैन हैव बेटर ब्रांड रिकॉल एंड ऑल ऑफ दैट. And as you saw, backward integration company is doing. The company has your price valuation clauses. Then company has a global footprint where company is expanding with acquisition of these companies. Now these were the main reasons why this company attracted me. आपने देखो कंपनी competitive moat है, company is moving higher up the value chain by making a propulsion systems. कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी तरह से ग्रो की है, कंपनी पास्ट में भी अच्छी तरह से ग्रो करी है, एंड फ्यूचर में भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन ग्रो एट अ गुड पेस. So with that, I hope you guys understood what the company makes. And just to summarize it, what company basically makes your traction transformers, different types of electrification equipment, and now company is moving up the value chain by making entire propulsion systems. Now we'll move to the result and Concall valuation analysis of the company. We'll look at what kind of revenue growth the company is guiding, what kind of margins, what kind of valuation is coming out from FY27 from FY28 point of view. And as always, we have to look at valuation on a forward basis, because if you look at it, कंपनी का पास में भी जो ग्रोथ रेट है, दैट कंपनी की गाड़ी बहुत फास्ट पेस पे चल रही है. सो अगर आप रेयर व्यू मिरर में देखोगे, सो इनमें सॉर्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, दैट इज वाई मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग. यू हैव टू लुक एट द वैल्यूएशंस ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस, एंड विल ओनली कंसिडर स्टैंड अलोन बेसिस, बिकॉज वो एक्विजिशन का इम्पैक्ट वगैरह आएगा. सो नॉट कंसिडरिंग दैट, विल ओनली लुक एट द स्टैंड अलोन बिजनेस कितना ग्रो करेगा. एंड अगर आप देखोगे स्टैंड अलोन में भी इतना कुछ फर्क है नहीं रेवेन्यू में, सो इट्स काइंड ऑफ द सेम एज वेल.
So we'll consider standalone in projecting and analyzing. You can see कि कंपनी के रिजल्ट्स इतने अच्छे क्यों आए, बिकॉज कंपनी का एक 10x गोल है कि FY31 तक $1 बिलियन रेवेन्यू करना है. देन एलिवेंट का थोड़ा सा मार्जिन ट्रैक था, बट स्टैंडर्ड बेसिस पे कंपनी का अच्छा है. देन कंपनी इज ट्राइंग टू ट्रिपल इट्स वॉलेट शेयर, मूविंग टू प्रोपोर्शनल सिस्टम्स, हैज एक्सपैंडेड हायरेक्स एड्रेसेबल मार्केट. देन कॉपर में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी कर रही है, एंड प्रोपोर्शन में अप्रूवल्स भी मिल रहा है कंपनी को. दीज वर सम ऑफ द रीजंस कि कंपनी के इतना अच्छे रिजल्ट्स क्यों आए. नाउ विल लुक एट द मेन सेक्शन की कंपनी जो इतना बड़ा $10 बिलियन का जो कंपनी रेवेन्यू गाइड कर रही है वो कैसे आएगा. सो मैनेजमेंट ने बेसिकली क्या बोला था कि कंपनी 10 ईयर्स में 10 ईयर्स में कंपनी हैज बेसिकली ग्रोन 10x, एंड कंपनी इज गाइडिंग कि अगले 5 साल में विल अगेन ग्रो 10x, एंड $1 बिलियन का टॉप लाइन करेंगे कंपनी थ्रू एक्विजिशंस एंड ऑर्गेनिक एक्सपेंशन. सो ग्रोथ किधर से आएगी. फर्स्ट इज रेलवे ट्रांसफॉर्मर्स. रेलवे का कैपेक्स भी ये साल बहुत अच्छा था. इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रोलिंग स्टॉक का मॉडर्नाइजेशन होगा. हिंद रेक्टिफायर्स होल्ड्स द मार्केट लार्जेस्ट शेयर इन इंडिया. सो FY26 में 56% था. This is your steady growth, margins are protected by price variation clause. This is basically like the core business segment जो अच्छा cash flows वगैरह भी देता है. Then we have your propulsion systems and electronics. As I said before, अगर कंपनी का अच्छे टेंडर आता है कंपनी के प्रोडक्ट्स गेट अप्रूव, सर्टिफिकेशन मिलता है, then this section can grow tremendously. Now moving on to the capacity expansion section, we look at the capacity expansion the company is doing and company is guiding. So Q1 FY27 में कंपनी का ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर का प्लांट लाइव जाएगा, विच हैज़ अ रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 150 करोड़ पर ईयर. देन यू हैव ए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स SMT. SMT मतलब सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है फॉर ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स, बैटरी चार्जर्स एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वंदे भारत ट्रेन सेट्स. उसके लिए कंपनी का रेवेन्यू पोटेंशियल इज अप्रॉक्सिमेटली 100 करोड़ पर ईयर. दैट इज गोइंग लाइव इन Q2. Then we have a Nashik expansion. The company is doing a greenfield or a brownfield expansion to consolidate industrial rectifiers, freeing up primary Mumbai plant entirely for your high margin railway oligopoly products. So अभी तक इस पर क्लैरिफिकेशन आना है. So Q1 FY27 में इस पर बेटर क्लैरिफिकेशन आएगा. And then company also did its test lab का qualification. And coming to a more detailed version of the capacity tracker, we can see FY26 में around 70 to 90 crores of capex किया था. Then company ने backward integration and global manufacturing assets के लिए use किया था. And company is deploying approximately 50 crores of capex in your FY27. And company QIP कर रही है उसके लिए. company QIP हो भी गया I think. So this is a more detailed P&L and a easy to understand P&L to understand the capacity expansion, कब revenue में reflect होगा, all of these different timelines. So quarter on quarter basis पे आप evaluate कर सकते हो if the company is on track to publish its facilities, approval, certifications on time आ रहे हैं क्या, and company is on time to achieve its guidance. With that, we'll move to a valuation and projection section. So if you look at it, company is basically guiding a 30% top line growth on a standalone basis, and with kind of margin expansion the company is seeing. बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह कर रही है. सो EBITDA 35% से ग्रो कर सकता है, एंड पैट अप्रॉक्सिमेटली 35-40% से ग्रो कर सकता है. कंसिडरिंग दैट बेस केस में, दैट इज द हाई प्रोबेबिलिटी आई लाइक टू कंसिडर, कंपनी कैन डू अप्रॉक्सिमेटली 12-30 करोड़ ऑफ रेवेन्यू एंड अप्रॉक्सिमेटली 77 to 80 करोड़ ऑफ पैट, एंड पैट ग्रोथ अज्यूम करें 35%. थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलेगा. विद दैट उसके अकॉर्डिंग कंपनी की प्राइस टू अर्निंग्स आ रही है 42 टाइम्स. सो इफ यू लुक एट इट, 30% का ग्रोथ इंजन है और 35% का ग्रोथ इंजन है, दैट इज अवेलेबल एट 42 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स. दैट सीम्स लाइक अ फेयर डील टू मी. But again, valuations are subjective. Some might think it's expensive, some might think it's cheap. But even if you look at it, PEG ratio कंपनी कितना आ रहा है, approximately 1.2-1.5 times के अराउंड PEG आ रहा है. And अगर एक कंपनी 30% प्लस से ग्रो कर रही है, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि वैल्यूएशंस कंपनी के 10-20 मल्टीपल पे आएंगे. ऑफकोर्स वैल्यूएशंस विल बी थोड़े बहुत स्ट्रेच. So you have to see for yourself if you think the valuations are reasonable and worth investing in. Currently, I have told you that I am invested. What times invested हूँ मैं, so you guys have to take your own decisions. And this is a quarterly expectations model that I have built for you guys. So basically in railway companies में क्या होता है, H2 that is your Q3 and Q4 में सबसे ज़्यादा execution होता है. Q1 and Q2 are a bit lean, but Q3 and Q4 में we have to expect kind of the back heavy lifting जो होता है. So Q1 में expected revenue is 275 crores, expected PAT. You guys can just note down these figures and evaluate on a quarter basis if the company is on track to achieve it. Its guidance, overall guidance, quarter on quarter basis पे अपना देखना पड़ेगा. And this is a list of the most important questions or points discussed in the con call. That if you guys don't want to attend the पूरा 1 घंटे का con call, you guys can just look at this summary. I attended the con call and उनमें से जो मेरे को सबसे important questions लगे और जो सबसे valuable insights लगे, that I have summarized for you guys. You guys can just go through it. I'll scroll down for you so you guys can pause and read the video. So yeah, these were basically the Q&A con call insights. With that, we'll move to a conclusion of the video.
So what we saw in today's video is we looked at what is Hind Rectifiers. Basically, Hind Rectifiers makes your traction transformers, your IGBT converters, and is now company moving to making your entire propulsion systems. Company is moving up the value chain. Company will have higher margins, and company can grow at a good pace going forward. Approximately 30% का growth guidance दिया है company ने. So उसके according valuations come around 42 times, which is kind of reasonable considering company का bottom line can grow at 35%. Plus अगर अच्छा operating leverage आता है, then company can also grow north of that. So company looks like a fair deal to me. As I said, I am invested, but you guys have to take your own decisions. This is not a buy or sell recommendation at all. So just do your own research. This is simply to आपका analysis simplify, आपका research simplify करने के लिए ये video बनाया गया है. So with that, if you are kind of like a current investor in this, I don't see any reason why you should exit. But if you are a new investor looking for it, I think this is a good opportunity. And अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है stocks, then it can again be a good opportunity for you to buy in this company. But that's just my personal opinion. You guys have to do your own research. So that was it from my end for today, guys. I hope you guys liked the information, found the analysis informative. If you found it informative, make sure to like and also comment down below what was the favorite part of the analysis. If you are invested in the company or not, what next companies you want me to analyze, or what kind of inputs you have for the company. Also subscribe to the channel for more such in-depth guides and analysis. And with that, I'll see you guys in the next one. Thank you.